Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 101 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 101 is adopted. Clauses 102 and 106 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 102 to 106 are adopted. Clause 1 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri John Britas. I move, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 1 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1 is adopted. The enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be passed. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. श्री आपके लेटर का जवाब जा माननीय प्लीज माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट्स। मैं क्लियर करना चाहूंगा, माननीय संजय जी का पत्र मिला था, माननीय चेयरमैन के यहां से उनका जवाब भी गया। अभी एक पत्र चेयर को मिला हमारे सदस्य माननीय गोयल जी से। दोनों लोगों ने सवाल उठाया है कि बिल के इंट्रोडक्शन यहां नहीं हो सकता। दरअसल बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहां कंसिडरेशन और पासिंग के लिए आया है। प्लीज नंबर 1 मैं लेट मी कंप्लीट। नंबर 2 इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर वो हाउस तय करेगा। ये एस्टेब्लिश परंपरा है जब से आपकी संसद काम कर रही है। देयर आर इन नंबर ऑफ रूलिंग्स, मैंने खुद इस पर डिटेल में रूलिंग दी है। रूलिंग से भरे पड़े हुए प्रेसिडेंट की हाउस तय करेगा, आप डिस्कशन से तय करेंगे, ये आपको स्वीकार करना है। और उसके लीगल स्क्रूटनी का आप सवाल उठाते हैं तो जुडिशरी तय करेगा, नॉट चेयर कोई अधिकार नहीं। श्री अमित शाह टू मूव नो परमिशन, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। श्री अमित शाह टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट 2022। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी बोलना चाहेंगे आप? जी, उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे चर्चा का यहाँ पर बिल पेश करने का मौका दिया है। महोदय, ये बिल जो मैं लेकर आया हूँ ये राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकरण के उद्देश्य से लाया गया बिल है। मान्यवर, दिल्ली का कुल क्षेत्र लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है। एनडीएमसी और दिल्ली कैंट को छोड़कर पूरे दिल्ली की सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी ये 3 नगर निगमों की, और एनडीएमसी और कैंट के इलाकों को छोड़ देते हैं तो लगभग 1484 में से 1400 वर्ग किलोमीटर, लगभग 95% क्षेत्र, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम के ये 3 बांटे गए निगमों की है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी ये सिविक सेवाओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। मैं ये इसलिए बताता हूं कि इसी से तीनों नगर निगमों का सुचारू रूप से काम करना कितना महत्वपूर्ण है वो स्पष्ट हो जाता है। राजधानी के अंदर ही राष्ट्रपति भवन,
सर्वोच्च अदालत, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, ढेर सारे देशों के राजदूतों के निवास, उनके कार्यालय, और जब भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के आते हैं तो राजधानी की उनकी मुलाकात बहुत स्वाभाविक बनती है। उस स्थिति में राजधानी की सिविक सेवाओं का महत्व और बढ़ जाता है। वो सुचारू रूप से चालू रहे, वो नागरिकों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए और देश के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, इस संशोधन जो मैं लेकर आया हूं उस पर बाद में सभी सभासदों से इनके विचार सुनने के बाद मैं जवाब दूंगा। उसके पहले मैं इसका एक इतिहास बताना चाहता हूं। मान्यवर, 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत ये नगर निगम काम करता था। 1957 में एक कानून के द्वारा दिल्ली का म्युनिसिपल प्रशासन एस्टैब्लिश किया गया। उसके अंदर 93, 1993 में और 2011 में इसको अमेंड किया गया और 2012 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम लाकर दिल्ली नगर निगम को 3 निगम निकायों में बांट दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। और बांटने के कारण को भी मैंने गृह मंत्रालय में बहुत खंगाला है, मगर किसी भी फाइल पर कोई कारण उपलब्ध नहीं हुआ। एक प्रकार से आनंद फानन में बिल लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया वो तो जो लाए हैं वो ही बता सकते हैं, परंतु रिकॉर्ड पर इसके कोई उद्देश्य उपलब्ध नहीं है। मान्यवर 10 साल हो गए, जो अनुभव आया है ये अलग प्रकार का है। स्वाभाविक रूप से जब ये निगम बांटे गए होंगे, बंटवारा हुआ होगा, उद्देश्य अच्छा ही होगा, सेवाओं के सुधार का होगा, दिल्ली की सिविक सेवाएं और मजबूत हो वो होगा, परंतु परिणाम ऐसा नहीं आया। और परिणाम ऐसा न आने के कारण क्या है, इसमें 4 मुख्य कारण नजर में आए हैं। एक तो तीनों नगर निगमों द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही है वो अलग अलग है। तो एक ही शहर में नीतियों की दृष्टि से एक वाक्यता नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों नगर निगमों को जब बांटा गया तब उसके वित्तीय संसाधन और दायित्व का ठीक से आकलन नहीं किया गया। मैं सभी रिकॉर्ड देखकर जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बता सकता हूं कि 2 नगर निगम तो वित्तीय रूप से सस्टेन ही नहीं हो सकते। इस प्रकार से उसका बंटवारा किया गया। अब जब वित्तीय रूप से सस्टेन नहीं हो सकते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको टैक्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को रोज चलाना है। तो एक ही शहर में अलग अलग प्रकार के नीति नियमों से तीनों निगम चलते हैं। कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में भी असमानता है। इसके कारण बहुत गहरा असंतोष तीनों निगम के कार्मिकों के बीच में है। और मैं कहना चाहूंगा मान्यवर कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और चौथा कारण भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से संजय जी, आपको चेयर से आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। आप क्यों बोल रहे हैं? प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के चेयर से ना बोलें प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, स्वाभाविक है उनका विरोध, और मैं भी अपेक्षा करता हूं ऐसा ही होगा, करना भी चाहिए उनको। परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा, और मेरा इनसे विनती है कि वो भी जवाब में बताएं।
कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया है। मैं आंकड़ों के साथ इस सदन के पटल पर रखूंगा, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य से अगर राज्य की सरकारें स्थानीय निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो ना पंचायती राज सफल होगा, ना अर्बन डेवलपमेंट के सारे निकाय सफल होंगे। इसको राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर जिसका जो अधिकार बनता है वो देना पड़ेगा। हम भी कई सारे राज्यों में सत्ता में हैं, कई सारे राज्यों में अलग विचारधारा की, अलग पार्टी की नीचे सत्ता है, कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कई जिला पंचायत में, कई म्युनिसिपालिटी में, कहीं पर भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं देखा है। मान्यवर, मैं 16 साल की आयु से सार्वजनिक जीवन में ढेर सारे आंकड़े मैंने भी स्टडी किए हैं, मगर मैं जब आंकड़े बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि जिसको भी उस पर ऑब्जेक्शन हो मेरे स्टेटमेंट पर, वो सभी ने वास्तविकता सदन के पटल पर रखनी चाहिए। और इसके कारण लगभग 250 से ज्यादा बड़ी हड़तालें हुई है। मान्यवर, 250 से ज्यादा। इसके पहले के 10 साल ले लेते हैं तो 2 बड़ी हड़तालें। क्यों, क्या हो गया? 10 साल के 2 अंतराल में कहां 2 हड़तालें और कहां 250 हड़तालें? क्या हुआ है? प्लीज प्लीज मान्यवर, मगर 15 साल से राज्य सरकार हमारी नहीं थी। प्लीज ये 10 साल से ही प्रॉब्लम हुआ है। आप संजय जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के ना बोले प्लीज। बीच में इस तरह से आप प्लीज कर रहे हैं कहने के लिए 15 साल में तो हम थे ही। अगले 5 साल में हड़ताल नहीं पड़ती थी। आप पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करने के कारण ये हड़तालों की संख्या बढ़ी है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने संजय, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। मान्यवर, बिना चेयर की अनुमति के ना बोले प्लीज। वो हल्ले से प्लीज 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 बैठ बैठ नहीं, आलो प्लीज 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 प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी। प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी। प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। मान्यवर, आलोचना करने के लिए तो गृह होता है। आलोचना का अधिकार जिनका इतना है उतना ही मेरा है। मैं कर सकता हूं, आप जवाब भी दे सकते हैं, मगर बीच में टोका टोकी से नहीं दे सकते। प्लीज, आपकी पार्टी को जो समय मिला है उसमें तथ्यों के साथ बताइएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा और मैं बाध्य हूं उसका जवाब देने के लिए। मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। बहुत सारे सदस्यों ने संशोधन भी रखे, मैंने ध्यान से पढ़े हैं। मैं इसका डिटेल जवाब भी बाद में दूंगा, मगर पहले एक बार मेरा सभी से अपील है कि पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर सभी लोग मेरिट्स में चर्चा करें। हमारे खिलाफ भी आप जरूर बोल सकते हैं, आराम से बोलिए, कोई चिंता का विषय नहीं, और मैं हर बात का जवाब भी दूंगा, परंतु बाद में मेरा जवाब भी सुनना चाहिए। धन्यवाद। Motion moved. There are 2 amendments by Sri John Britas and Sri Sukhendu Sekhar Roy for reference of Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Sri John Britas, are you moving? Sir, I am moving because it has Please. been brought Yes, because yes. of political reasons. Yeah. Mani Sukhendu Sekhar Roy ji, are you moving? Thank you. Not move.
The motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. Abhishek Manu Singhvi ji. Honorable Chair, sir, distinguished members of this distinguished House, August House, as I rise to oppose this bill, I would like to say at the outset, honorable members, that this bill is, among other things, 4 things. It is constitutionally suspect, it is legally untenable, it is administratively blunderous, and it is politically hypocritical. And I will make good each of these 4 heads shortly. But let me say at the outset also, with deep respect to honorable members, that this bill is about control, and more control by a control freak Sarkar. It is nothing to do with the improvement of the plight of the citizens of Delhi or its hapless citizens. This is a dangerous politics of delay through delimitation, going to lead to disorder, disorganization, and disaster. And unfortunately, the ruling party, which is moving this bill, wants to rampage amongst the MCDs, in addition to the above 3 Ds, to create also the 3 Cs: control, chaos, and corruption. Now, friends, let me make my 4 heads good one by one. Why is it constitutionally suspect? Let me concede in favor of the ruling party, the Honorable Home Minister is here, that 239AA of the Constitution, which this bill invokes, gives special powers to Parliament. No doubt about it. Even though you must remember that Delhi is the only entity in India which is constitutionally given a legislature. None other, not Puducherry, not earlier Goa, etc., etc. I will further concede that for 3 subjects, Delhi NCT can make no laws at all, as we know. Land, law and order, etc. They can't touch it. It's beyond their jurisdiction. And I will further concede that in the other areas other than these 3, if Delhi makes a law, then the central government, if it acts on the same field, will override. Subject, of course, to presidential assent, which in view of the central government recommendation will never be given. So, I concede these 3 points in favor of the central government. But now, why is this bill constitutionally suspect, indeed unconstitutional? Why? Because, sir, we forget firstly that we are dealing with municipalities. That is the subject. This subject was created by a special amendment to the Constitution, a 74th amendment, with respect to 1993, pursuant to a high-level committee report called the Dr. L.M. Singhvi Committee Report, for decentralization of governance. Secondly, if you pick up this Part 9A, Part 9 is Panchayat, Part 9A is municipalities, you will find that entire provisions, 243, Q, R, S, U, it goes on beyond Z, all of them, on the basis of decentralization, give power to make laws only to a state government for municipalities. Number 3, even though Parliament has overriding powers, it has overriding powers under which provision, sir? Under 239AA. When did 239AA come? It came in 92. You overrode that by a subsequent constitutional amendment, the 74th Amendment, in 1993. Now, where does it leave us? You have a later constitutional amendment, 93, and secondly, you have a special constitutional amendment for municipalities. As a first-year student of law knows that a later and a special law overrides an earlier and a general law. So, sir, I call it constitutionally suspect. It is legislatively incompetent. Of course, it will be challenged.
But this approach of this government कि अभी तो पास कर दो बाद में देखी जाएगी is hardly behoves a supposedly responsive or responsible government. That's my first point, sir. My second point, the second head is this bill is administratively blunderous. And it assumes that the Janta of India and Delhi eats grass. If improvement of MCD was the object, as the Honorable Home Minister has just said, and I'm sure he will give more facts and figures, then can he tell us how the admitted revenue gap of 2,200 crores just a year ago in these municipalities altogether, that is salary and other pension bill and other expenses of 8,940, these are official figures, sir, minus earnings of 6,725 crores, deficit is 2,200 crores. How will it be bridged by this bill? Is there a single provision in this bill, any policy which will improve this? So this is supposed to be a bill for improvement. Secondly, will he tell us how Own Finance Commission of the central government has recommended a devolution of 488 rupees per person per year for every municipality in India. 488 rupiya prati vyakti prati varsh. That comes, sir, for Delhi for the current year or year ago to 4,087 crores. Sir, did you as the central government give 4,087 crores to the municipality of Delhi? Never. If you check up, you gave to a lot of other municipalities. Not the full amount, but you gave, not to Delhi. Then, sir, it is estimated that if you add up what you have not given to the Delhi municipalities for the last 10 odd years, I'm only taking 10, 11 years, the amount is about 12,000 crores. And you are saying improvement? You are first starving somebody and then saying he should be a healthy, bonny child. You are giving him no water and food and you are saying that we are improving them. Sir, thirdly, have you said anything in this bill about why the municipal corporations tax for property tax only 4 lakh properties, whereas in Delhi the minimum count of properties taxable for property tax is 1.2 million. यानी 12 लाख, उसका 1/3, 4 लाख आप टैक्स करते हैं property tax. Have you, honorable movers of the bill, shown us that your own statement is that this bill will improve by garnishing an additional 200 crores? This is your own estimation. And the gap is 2,200 crores in 1 year. So is this an improvement bill? It is not an improvement bill. MCD, sir, we have to accept it. And I say it as a fact, when I started my law practice, we were told that DDA stood for Don't Do Anything Authority. It is much better if you go to their parks now. Sports parks are very good. Sir, if you call it MCD, the most corrupt department, MCD, that would not be a wrong acronym. Sir, if you put on the top of this bill photographs of the mountains of garbage, if you put on this photographs of this bill of the agony of the Aam Aadmi or the middle level person who goes to the office of MCD, then you will realize that this bill is nothing but political hypocrisy. Sir, मेरा तीसरा पहलू कि ये किसी प्रकार से सुधार का बिल नहीं है. ये राजनीतिक आडंबर से ओतप्रोत एक विलंब एवं बाधा डालने वाली चाल चली गई है. ये राजनीतिक भय से प्रेरित है. ये परोक्ष उद्देश्य इसका है जो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है. नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने एमसीडी का क्या कर दिया है हाल. नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने क्या कर दिया है एमसीडी का हाल. यदि एकीकरण करना ही था तो क्यों लगा दिए 7 साल या 10 साल. इसका कोई जवाब नहीं है. जिस दिन प्रदेश के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि इस वक्त इस दिन हम घोषणा करने वाले हैं चुनाव की, उसके एक दिन पहले किस विशेष दुष्प्रभाव से आपने उनको एक और घोषणा करवा दी कि हम स्थगित करते हैं सब कुछ. क्या इसलिए क्योंकि मान्यवर क्या इसलिए मान्यवर कि आपने हर संस्था पर सफलता से दुष्प्रभाव करने की पीएचडी करी हुई है. और मैं कहता हूं कि धिक्कार है ऐसी संस्थाओं के और उनके अध्यक्षों के जो इस दुष्प्रभाव पे ध्यान देते हैं या उसके आधार पे एक्ट करते हैं.
सर 272 से 250 करने का औचित्य क्या है जो आपने किया है इसमें? क्या तो हो सकता है? क्या ये जो जादुई बटन है कि 272 से 250 करना एक यात्रा है कुशासन से सुशासन की तरफ, कि 72 को आपने 250 कर दिया? तो इसका उद्देश्य एक ही है। अगर आपने 2 सीट भी कम की होती तो डिलिमिटेशन की आवश्यकता होती, और डिलिमिटेशन का मतलब है विलंब, बाधा। तो क्या यह राजनीतिक आडंबर नहीं है? किस रूप से 272 से 250 बनाने से एक जादुई छड़ी से ये पूरा एमसीडी अगर एकाकीकरण भी हो गया तो भी सुधार हो जाएगी, हमको नहीं बताया जा रहा है। सर हमारी नहीं सुनते हैं तो कम से कम संविधान की सुन लीजिए, और उच्चतम न्यायालय ने जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विषय में कहा था उनकी सुन लीजिए। ये तो विशेष है, गुजरात से है, अहमदाबाद। जहां तक अनुच्छेद 243U का सवाल है, जरा उसको उठा के पढ़ लें। मैं कोट कर रहा हूं, एवरी म्युनिसिपैलिटी unless sooner dissolved, this is a constitutional provision brought in 93, 74th amendment. Every municipal corporation unless sooner dissolved shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. और दूसरा, ये तो डिसोल्यूशन का है, आपका केस डिसोल्यूशन का नहीं है। दूसरा, an election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration specified above. ये सीधा लागू है। आपने जिस दिन घोषणा कर रहे थे चुनाव के कार्यक्रम की, उस दिन आपने ये घोषणा करवा दी। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। एक्सपायरी है तो आपको उसकी एक्सपायरी, इसकी तारीख शायद मई में है, उसके पहले आपको घोषणा चुनाव करना पड़ता है। नंबर 6, जैसा मैंने कहा संविधान नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम उच्चतम न्यायालय को तो पढ़ लीजिए। 2006 में एक निर्णय है किशन सिंह तोमर, जो निर्णय है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विषय में, और उसमें कहा है कि ये 243U जो मैंने पढ़ा है, ये प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने कहा है ये इसलिए बनाया गया है कि विलंब को हटाने के लिए बनाया गया है। संविधान में चुनाव नहीं होते थे एमसीडी में, उनको करवाने के लिए बनाया गया है। और फिर कहा कि एक ही अपवाद होता है इसका, कोई गंभीर और व्यापक प्राकृतिक विपदा, प्राकृतिक विकृति, और फिर उसके आगे का है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, भूकंप, कोई बहुत बड़ी बाढ़ इत्यादि, और ये भी व्यापक और गंभीर होने चाहिए। एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड, कोट अनकोट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव टू हैव इलेक्शंस ऑन टाइम। आप ये कर रहे हैं मान्यवर, आप सब जानते हैं कि आप 243U को संशोधित नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं आसानी से। आप ये भी जानते हैं कि 7 वर्ष से आपने पुनर्निर्माण करने का, या 10 वर्ष से एमसीडीज में कोई काम नहीं किया। आप ये भी जानते हैं कि आपने एकाकीकरण का नाम भी नहीं लिया इतने सालों से। इसलिए आपने चुनाव के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये जादुई छड़ी घुमा दी। ये क्या राजनीतिक आडंबर नहीं है, जो मेरा तीसरा हेड है? मुझे याद आता है बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने जो लिखा था एक बड़ी फेमस किताब, ग्रामर ऑफ एनार्की, एंड आई कोट, सर, I do feel, however good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad, because those who are called to work it happen to be a bad lot, unquote. क्या आप इतिहास के बैड लॉट में जाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवार सरकार नहीं चाहेगी। एमसीडी का एकाकीकरण तो सब सिर्फ बहाना है। दरअसल भाजपा को खुद की एंटी इनकम्बेंसी से बचाना है। इसलिए ये गलत नहीं होगा अगर आप इसको बीएनपी पार्टी कहें, भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय नियंत्रण पार्टी, कंट्रोल फ्रीक पार्टी। येन केन प्रकारेण किसी तरह से सत्ता में रहना है, संविधान का हनन हो या न हो। सर, माय 4th and last facet, it is legally untenable. Why, sir? We give the highest importance to decentralization. We give, in fact, decentralization is another name for federalism. Sir, 1 second aside, it's very interesting. The word federalism or federal is not used anywhere in our constitution, which is the world's 2nd or 3rd largest constitution. There is a word federal used for federal court, but not federalism as you, संघीय ढांचे की बात नहीं है, कहीं भी, not a single word. And yet it is interesting that without using federalism or the word federal, the Supreme Court has held federalism to be part of our basic structure. Basic structure means that if you buy a constitutional amendment
Take away federalism, you can't do it even then. Now, sir, I am asking this question that Parliament enacts 9 for panchayats, 9A for municipalities in 93 by the 73rd and 74th amendments. It gives a huge impetus for decentralization, local self-governance, pursuant to the LM Singhvi report on this issue. Para after para, 2018 judgment of the Supreme Court, Constitution Bench, 5 judges. I don't have the time to read you the paras. I'll give you the para numbers, those who are interested, 49, 52, 54, 56. They say, I'm quoting, the main purpose of representative government is to represent the public will, perception and the popular sentiment, unquote. Then they say, representative democracy, it is necessary that elected reps develop a sense of belonging with the constituents. Sir, by contrast, have you not driven a coach and 4 through this? Have you not decimated the spirit and the letter of Part 9 and 9A of the Constitution? You are governing Delhi's municipalities, the bottom level. Delhi has no panchayats as such. It's an urban. So the lowest level of governance, you are governing with a hukumnama from Delhi, farman from a distant emperor, with no regard to ground realities of decentralized governance. You are excluding the government, whosoever the government may be of Delhi, from participatory governance. And then, sir, why I said legally untenable. There is a very nice clause here in this bill you have got, sir. 2B, 2 bracket B. It says government everywhere shall mean central government. मैंने कहा था control freak याद है आपको? Control freak सरकार. Central government, and you know this clause which you have put says it applies to 19 provisions I counted. It says this government used in 19 provisions shall mean central government. 3A, 5, 55, 56, 193, कौन से प्रावधान हैं? These are those provisions, sir, which provide for creation and division of wards, creation and division of zones, complete control over the commissioner, his own salaries, loans, general superintendence regarding building plans. These are words of government there. आपने कहा सब जगह उसको central government पढ़िए. This is decentralization. This is part 9 and 9A of the 74th, 73rd constitutional amendment. This is devolution of powers. And sir, before you abuse the late lamented Sheila Dikshit, remember, there was an India which was born and thought and acted before the BJP came to power. There was an India which born and thought and acted. This trifurcation, most people have not noticed this. The Balakrishnan committee recommended trifurcation in 1987, sir. जो आप जिसको knee jerk reaction समझते हैं किसी सरकार का, in 1980, I'm sorry, not 1987, 1989, the Balakrishnan committee. Then a Virendra Prakash committee recommended in its report of February 2001 splitting into 4 corporations. Then in 2011, a group of ministers of the central government recommended splitting into 5. That may be right or wrong, but it was not a knee-jerk reaction, and it has stood the test of time. Sir, my time is limited. Let me wind up by saying, with all these background, the statement of objects of this bill uses almost Alice in Wonderland language. It's long on rhetoric and short on substance. I have given you the amount of money you have deprived and starved the MCDs of. I have given you the fact that all municipalities require central government funds. And yet, what your SOR, your statement of objects says, after roughly 10 years of your governance in the MCDs or 8 years, you are the people there. You are able to say with a straight face in the SOR of this bill, which you are asked to pass, I quote, there was a huge gap in resources available to 3 corporations. And then you say, this gap has widened, increasing the financial difficulties of the MCD. ये तो बड़ी एलिस इन वंडरलैंड बात है कि केंद्र सरकार भी आपकी है, एमसीडी में भी आप हैं. फाइनेंस कमीशन कहता है कि 488 रुपीस पर पर्सन पर ईयर देना है. सर, जस्ट 1 मिनट मोर. देयरफॉर आई वुड से विद रिस्पेक्ट कि ये बात गलत नहीं है कि हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम. आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता. सर, व्हेन यू टॉक ऑफ 272 to 250 delimitation, election postponement, do you talk of the corruption in the MCD under your watch? Do you talk of the mountains of garbage? Do you talk of the annual 2,200 crore deficit? Do you talk of the non-remittance of the central government funds?
You don't talk of any of this. Where is the improvement going to be? By just making a jadui chhadi of 272 to 250 or saying trifurcation into unification. Therefore, I can only quote the words immortalized by the late lamented Sushma Swaraj. And I end with that, sir. Tu idhar udhar ki baat na kar, ye bata de kafila kyon luta. Tu idhar udhar ki baat na kar, ye bata de kafila kyon luta. हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबारी का सवाल है. Thank you very much. थैंक यू. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी. माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं यहाँ माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत एमसीडी एकीकरण बिल के ऊपर समर्थन में खड़ा हुआ हूं. देखिए, हम एकीकरण के पक्ष में हैं, वो विभाजन के पक्ष में हैं. तो हम सदैव अखंडता के पक्ष में रहते हैं, वो खंडता के पक्ष में रहते हैं. ये तो हमारे उनके बीच की सोच का एक सतत अंतर है. अभी हमारे विद्वान मित्र आपस में बात न कर प्लीज. Dr. Singhvi ji, who is a very learned legal luminary and in a very intellectually loaded initial speech, he has used certain words: suspect, incompetence, control freak, chaos, political blunder. मुझे ऐसा लगा कि शायद ये शब्दों का समायोजन उन्होंने जो भी किया हो, ये मूल रूप से कहीं उनकी पार्टी के भाव से आ रहे थे. मुझे लगा कि अगर यह समायोजन किया जाए, that an incompetent suspect in an penchant for uncontrolled, up to have a full control, committed a political blunder and plunged the party into chaos. तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा. अब यहां मैं एक बिंदु और ध्यान दिलाना चाहता हूं. उपसभापति महोदय, आज 5 अप्रैल है. आज के दिन का एक महत्व है. आज से 11 साल पहले यही 4 और 5 अप्रैल के समय अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था. दिल्ली की राजनीति में उसका बड़ा महत्वपूर्ण महत्व था, क्योंकि हमारे जो 2 प्रमुख विपक्षी दल हैं, एक के लिए जो कांग्रेस पार्टी थी, उनके लिए वो खलनायक थे जिन्हें जेल में भेजा जा सकता था. दूसरी पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में है, उनके लिए वो गुरु थे, प्रेरणा के स्रोत थे, पितृ पुरुष थे, पर उन्हें बरगलाया जा सकता था, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि उन्हें बरगलाया जा सकता था. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ने ही गुरु माना. आपकी पार्टी में एक थे जो बहुत गुरु गुरु कहते थे, उन्होंने आपको निपटा दिया, और इधर जो गुरु के चेले थे, उन्होंने गुरु को निपटा दिया. एक हिंदी में कहावत है, नाम तो किसी का लिया नहीं, प्लीज. उपसभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया. आपका जो समय होगा उतना ही बोल सकते हैं. कहावत है, जो समय जिसका है उसी के अनुसार. एक हिंदी में कहावत है कि गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हुई गए. तो वो यहां पर दिखाई पड़ती है. हमने नाम किसी का नहीं लिया है. समझने वाले समझ रहे हैं. बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है. अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जो इन्होंने बात कही, इस एकीकरण के 3 डायमेंशन हैं जो इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए. एक संवैधानिक है, एक व्यवहारिक है और एक राजनीतिक है. संवैधानिक दृष्टि से अभी बहुत सी बातें अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कही. तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में जब इसका उत्तर दिया, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के द्वारा ही इसमें यह परिवर्तन किया जा रहा है. संविधान के जिन अनुच्छेदों का वो उल्लेख करते हैं, 246 और 256, वो तो पूर्ण राज्यों पर लागू होते हैं. दिल्ली के संदर्भ में संविधान की धारा 239A बहुत स्पष्ट है. और मैं सदन के सुलभ संज्ञान के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आर्टिकल 239AA स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द डेली क्लियर कट कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम इनेक्टिंग एट एनी टाइम any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending to, varying to, opening, repealing the law so made by the legislative assembly. तो ये संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद को प्रदत्त अधिकार हैं, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने यह काम किया है. और इतना ही नहीं, जो लोग आज ये कहते हैं कि सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए, वही लोग
जनवरी 2016 में जब हाई कोर्ट ने यह पूछा था कि एमसीडी किसके हाथ में है, इसलिए मैं कोर्ट का वो उदाहरण भी कोट करना चाहता हूं। इन जनवरी 2016 when the high court asked who controls the municipal corporation of Delhi, अब समझिए राज्य सरकार क्या जवाब देती है। Delhi government in response said that the MCD did not come under it, but if court directs they are willing to take over the control of the corporation। यानी वो स्वयं तो कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, मगर हमारी इच्छा है कि यह मेरे अंडर में आ जाए, ये कोर्ट के सामने वो व्यक्त कर रहे हैं। जहां तक उपराज्यपाल के अधिकारों की बात है तो 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो एक्ट बना था उसी के अनुसार राज्यपाल को जो प्रदत्त अधिकार हैं जो कांग्रेस शासन के समय में मिले थे, उसी के अनुसार हमारी सरकार ने काम किया है। और वो अधिकार एक बार रिव्यू भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिव्यू होने के बाद उन अधिकारों की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेटिंग हुई है और उसके द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल या एलजी को यह अधिकार प्राप्त है। अब सभापति महोदय, प्रश्न यह होता है कि अधिकार तो किसी को प्राप्त होते हैं तो वो करता क्या है। इनको अधिकार प्राप्त थे, गृह मंत्री जी ने अभी संकेत किया कि क्या किया था, मगर हमें अधिकार प्राप्त हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए 36 लाख बेसहारा लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को स्थायी मकान देने का काम किया। और न्यायालय और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति कितनी ईमानदारी है यह इस बात से पता चलता है कि उसी न्यायालय ने जब यह कहा कि वित्त आयोग का गठन सरकार करेगी और उसके द्वारा निर्धारित पैसा एमसीडी को मिलेगा, मगर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी 2012-13 में चौथे वित्त आयोग ने 11,323 करोड़ रुपए एमसीडी को देने की संस्तुति की, परंतु वो उन्होंने नहीं दिया। और आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, इसके स्वयं के वित्त आयोग ने यह संस्तुति की कि 40,500 करोड़ रुपए निकायों को चलाने के लिए देने चाहिए। वो तो छोड़िए, सदन में यह प्रस्ताव किया कि हम इतना नहीं देंगे, हम 17,000 करोड़ रुपए देंगे, परंतु जब देने की बात आई तो 6,129 करोड़ रुपए मात्र दिए। इसीलिए गृह मंत्री जी ने उस शब्द का प्रयोग किया था कि एक सौतेला व्यवहार एमसीडी के द्वारा राज्य सरकार के साथ किया गया। और इतना ही नहीं, जब यह विषय हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार ने स्वयं अपने वित्त आयोग से जो निर्धारित किया है राशि वह उन्हें देनी चाहिए। उस हाई कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा, We accordingly allow this application to direct the GNCT to release the current financial year the remaining amount due towards the BTA to the three corporations on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 21-22। यानी हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किया है कम से कम उसके अनुसार कर दीजिए, परंतु इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया, केवल 674 करोड़ रुपए दिया गया। और फिर उसके बाद संवैधानिकता की जो लोग बात करते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने सीएए को लेकर अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए वो संवैधानिक था क्या? क्या विदेश संबंधी किसी विषय के ऊपर कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है? अभी एमसीडी को लेकर बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किसी एक्ट के विरुद्ध एमसीडीज को अधिकार है अपने सदन में पारित करने का? नहीं। तो जिन लोगों ने संविधान का मखौल उड़ाया वो आज संवैधानिकता की बात करते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य होता। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब किसी लॉ को पास होने की बात होती है तो अभी हाल के दिनों में एक बड़ी मजेदार बात हुई। फार्म लॉ है, किसान संबंधी कानून, सबसे पहले जिस राज्य की विधानसभा ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया वो थी पंजाब, और वो साफ हो गए। और गलती से ही सही, जिस विधानसभा ने सबसे पहले उसके समर्थन में पारित कर दिया था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, वो पंजाब में छा गए। तो अब आप सोचिए कि कई बार आप सोचते हैं कि आपने जो लॉ पारित किया है वो क्या किया है, वो सही या गलत, चुनाव का विषय भी इन्होंने इससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है चुनावों में उन्होंने एक अप्रतिम काम किया है। शायद चुनाव आयोग ने जो उनको चुनाव चिन्ह दिया है वो बड़ा उपयुक्त दिया है। या तो वो झाड़ू फेर देते हैं या झाड़ू फिरवा लेते हैं, बीच की कोई स्थिति नहीं रहती है। जैसे पंजाब में उन्होंने झाड़ू फेर दिया, मगर गोवा में 39 में 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में 70 में 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। दोनों जगह उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट की भी जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में तो
जितनी सीटों पे लड़े सब पे जमानती नहीं जब्त हुई। उपसभापति महोदय, 0.35% वोट मिला, जो नोटा से भी कम था। तो मुझे ये लगता है, अरे भाई, चुनाव का विषय बिल के संदर्भ में इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया। प्लीज संजय जी, माननीय संजय जी, प्लीज। देखिए, बिल्कुल हम बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके चुनाव का विषय इनकी पार्टी की तरफ से लाया गया है कि आप चुनाव को टाल रहे हैं। चुनाव शब्द इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया, हमारे द्वारा नहीं लाया गया, इसलिए मैं चुनाव शब्द पे जवाब दे रहा हूं। क्योंकि हकीकत क्या है कि लगता है उत्तर प्रदेश में सपा बसपा पर तो बुलडोजर चला, इन पे तो वैक्यूम क्लीनर चल गया, एकदम पता नहीं कहां कहां पे जो रह गए थे वो भी निकल के बाहर आ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने एकीकरण का यह प्रयास किया है तो क्यों किया। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में हम शायद कोई और उदाहरण हमारे विद्वान सदस्य बताएं, क्या दुनिया में कोई दूसरा देश है जिसकी राष्ट्रीय राजधानी में कोई एक मेयर नहीं है? हमारे यहां 3 मेयर। कभी अगर आवश्यकता पड़े तो दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा? मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 का वर्ष था, यूनाइटेड नेशंस में दिल्ली के मेयर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, तब हमारी पार्टी के मेयर थी। प्रणब मुखर्जी जी भी वहां उपस्थित थे, चिदम्बरम जी वहां उपस्थित थे, बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल थे वो भी वहां उपस्थित थे, और दिल्ली ने अपना प्रेजेंटेशन किया। आज आपने ऐसी स्थिति बना दी कि अगर दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी प्रतिनिधित्व करना हो तो वो संभव ही नहीं था। और 2 एमसीडी तो ऐसी बनाई थी कि उनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जाकर स्थापित होने की संभावना ही बहुत कम थी। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं गृह मंत्री जी को कि अब तीनों का एकीकरण करके भारत की वैश्विक क्षमता के अनुरूप दिल्ली का भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया है। अब मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो डिवीजन हुआ है उसमें संसाधनों का कैसा असंतुलित विभाजन हुआ, जिसका कि संकेत गृह मंत्री जी ने अभी दिया, इसका मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 80% से अधिक क्षेत्र या तो अनऑथोराइज्ड या अनप्लान्ड एरिया में है, जहां से रेवेन्यू का बहुत ही कम सोर्स आता है। तो एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसके पास बहुत कम राजस्व आएगा, तो उसके लिए सस्टेन करना ही मुश्किल है। दूसरी तरफ नॉर्थ एमसीडी में लगभग सभी बड़े प्रमुख जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स थे, 5 हॉस्पिटल्स आ गए, तो उनको कैपिटल रेवेन्यू बहुत उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जबकि उनके पास उसके उपयुक्त आय का स्रोत नहीं है। क्योंकि जब एक दिल्ली थी तो यह विचार करके नहीं बनाया गया था कि ये हॉस्पिटल्स भी अलग अलग क्षेत्र में होने चाहिए और यह भी अलग अलग क्षेत्र में होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, और देखिए टैक्स पेयर्स की ढंग से देखें तो ईस्ट दिल्ली में टैक्स पेयर्स की संख्या है 2,88,000, नॉर्थ में है 3,35,000 और साउथ में है 4,75,000। अब ये तो संख्या है, पर गुणवत्ता के आधार पे देखेंगे, संख्या के आधार पे देखेंगे, राशि के आधार पे देखेंगे तो उसमें साउथ दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर नजर आती है। इसलिए संसाधनों का एक बहुत असंतुलित डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से यह समस्या और बढ़ती चली गई। और उसमें फिर जब राज्य सरकार के द्वारा न्याय नहीं किया गया तो यह भी आप देखिए, दिल्ली का 1 साल का बजट 75,800 करोड़, एमसीडी के लिए संस्तुति 40,500 करोड़ और आवंटन 6,129 करोड़। बस यह संख्या अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि एमसीडी के लिए किस प्रकार का न्याय किया गया और क्यों एमसीडी के एकीकरण की आज आवश्यकता थी। मैं इसलिए तुलना करना चाहता हूं, यदि दिल्ली की एमसीडी की तुलना हो सकती है तो बीएमसी से हो सकती है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका कि बजट 46,000 करोड़ रुपए का है। इसीलिए उसके अनुपात में 40,500 करोड़ रुपए का बजट युक्तिसंगत लगता है। परंतु 6,000 जब दिया जाएगा तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किल होती है। परंतु उसके बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी 2020 में जहां 7.2 लाख बच्चे एनरोल्ड थे तो 22 में 8.70 लाख हुए और 47 नए विद्यालय भी खुले। दूसरी तरफ जो दिल्ली की राज्य सरकार है, स्वयं उसने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस उनके साथ संबंध है, उसमें करीब 12 कॉलेज हैं, उसके लिए उन्होंने लिख के भेजा कि हमारे पास संसाधन आर्थिक कम पड़ रहे हैं, हमारे लिए यहां पर सैलरी देना संभव नहीं है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज थे। और स्वयं इतना कम इन्होंने संसाधन दिए, इसके बावजूद एमसीडी ने बहुत अच्छे ढंग से उन विद्यालयों का संचालन किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। फिर चाहे दिल्ली के सौंदर्यीकरण का सारा भार एमसीडी के ऊपर हो, 15,000 पार्क हो, 3,700 पार्कों में झूले, 5,82,000 एलईडी लाइट्स लगाई गई,
सारा सौंदर्यीकरण हुआ। कोविड के दौरान छतरपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना जिसका उद्घाटन गृह मंत्री जी ने किया था। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया, जैसे मार्केट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट इत्यादि बनाने का भी काम उस समय सरकार के द्वारा किया गया। भले ही दूसरी तरफ किस प्रकार की व्यवस्था थी अलग बात है। दिल्ली जल बोर्ड जो पहले 10 साल पहले प्रॉफिट में था, आज हजारों करोड़ रुपए के, लगभग 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, वो अपने आप में एक अलग विषय था। तीसरी बात यह थी कि एक ही प्रकार की चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफर्नेलिया बहुत ज्यादा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। 22 विभाग थे, 66 हो गए, 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 3 विभाग, 3 गाड़ियां और अनेक प्रकार का जो सरकारी पैराफर्नेलिया होता है वो बढ़ता चला गया, जिसके कारण दिल्ली की जनता पर 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अधिभार बन रहा था, जिसको सरकार ने समाप्त करने का काम किया। एकीकरण होने से काम भी बेहतर होगा। और काम का उदाहरण देते हैं, अगर डीसीपी के 12 जोन हैं और वो यथावत काम कर रहे थे, तो यदि पुलिस के जोन उसी हिसाब से काम कर रहे थे तो प्रशासनिक जोन भी उसी ढंग से काम कर सकते थे। तो दिल्ली की जनता से ये 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अधिभार की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां पर मैं ये भी कोट करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने 2006 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को उसका अध्यक्ष बनाया था। दिसंबर 2020 में उन्होंने लिखा that it was the biggest mistake of then government to break the municipal corporation, which has led to the situation today. He said that his committee has recommended to the then union government, yani 2006 mein, and the Delhi government, that MCD of the Delhi was not easily divisible and that its division could bring the multiple problems, including the geographical challenges and the inequitable distribution of the resources. तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी सरकारों ने भी जो समितियां बनाई थी, उनमें भी जो व्यावसायिक आपको सजेशन मिला था, वो पूरी तरीके से आपने उसको नहीं माना। इसीलिए यह विभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि एक नहीं अनेकों स्ट्राइक हुई। 2021 में म्युनिसिपल स्टाफ ने जो स्ट्राइक की, उसमें 10 डिफरेंट ओकेजन पे लगभग 7 मिलियन वर्क आवर्स का लॉस हुआ। और जनवरी 6 से 21 के बीच में 52,000 इंप्लॉइज इन्वॉल्व हुए और 52,000 इंप्लॉइज का इन्वॉल्व होना अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक शुमार किया जाता है। दिसंबर 2020 में मेयर्स ने हंगर स्ट्राइक की मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के बाहर बैठकर। अक्टूबर 2019 में 260 टीचरों ने जाकर स्कूल के सामने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट किया। 2018 में अगर आप देखें तो सैनिटेशन वर्कर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया था और जो एमसीडी का ड्यू था वो नहीं मिल पा रहा था। और स्ट्राइक लगातार हुई, जनवरी 2017 में, जनवरी 2016 में, जनवरी 2015 में, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि जो पार्टियां थी, वो तो, जो पार्टी दिल्ली में थी, वो तो नई राजनीति की प्रतीक थी। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे, तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते, एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे, असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों करोड़ की, सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत लाके दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके एडमिरल साहब, उनको भी समाप्त कर दिया। फिर कहते थे सीएम आवास नहीं लेंगे, वो भी लिया। सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी लिया। अब वो वैगन आर कार भी नजर नहीं आती है। और चार्टर्ड प्लेन की भी आवश्यकता पड़ी, कोई बात नहीं। कहते थे नो वीआईपी कल्चर। याद करिए 2015 में 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बराक ओबामा आए थे, उस दिन बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो वीआईपी सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका अर्थ यह हो गया। फिर इतना ही नहीं, बिहार में जाकर राजद और अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए जाके, प्लीज हाँ जी बिल्कुल हो रही है मान्यवर। अरे इतना नहीं, सुनिए तो प्लीज बिल्कुल आप सुनाइएगा जनाब सुधांशु जी। अरे हमारे माननीय सदस्य प्लीज नई राजनीति, अरे नई राजनीति के प्रणेता हमारे माननीय सदस्य लोग भी पार्टी में जाकर उत्तर प्रदेश में सपा से भी गठबंधन करने का प्रयास किया। उनकी जो भी आपत्ति है मान्यवर,
मान्यवर बिल ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें। माननीय सुधांशु जी, कहना एड्रेस चाहता को हूं। चेयर करें, चेयर को एड्रेस करें। माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे, वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले, तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खाई जाती है। तो ये बल खाते चले गए और ऐसा बल खाए कि इन्होंने एक नई राजनीति ये जरूर शुरू की कि पहले कहा एक दूसरे पे कि हम मानहानि का केस आरोप लगा देते थे, फिर माफी मांगते थे। हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से भी माफी मांग चुके, औरों से भी किया। तो ये एक नई राजनीति जरूर है। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने इस मामले में एक नई राजनीति का सूत्रपात करने में जरूर सफलता हासिल की। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब बिल के विषय में ये बात हो रही थी तो किस प्रकार का सरकार का संवेदनशील रवैया है, मैं ईमानदारी से पूछता हूं, यह बताइए, इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई, कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति। उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था और सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है। और फिर इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते हैं, प्लीज इस ढंग की अव्यवहारिक बात, माननीय सुधांशु जी ऑन द बिल, हाँ, इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते सभापति महोदय। प्लीज कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है। संजय जी यूट्यूब पे डाल दो, प्लीज संजय जी, अब वो प्लीज संजय जी, पे डाल दो। सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं, एक बहुत ही हल्की बात लगती है। अब सुनिए, अरे भाई आगे बात तो सुनिए। प्लीज सुधांशु जी एड्रेस द चेयर। अब मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की अव्यवस्था की, मैंने कोविड के दौर का क्यों जिक्र किया, हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोविड के दौरान जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, मई 2021 का मैं हाई कोर्ट का कोर्ट बता रहा हूं, जब उसने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, इट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इफ यू मेड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट्स द वर्थ इफ इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जिसको ये सबसे बड़ा अपना महत्व मानते थे। फिर हाई कोर्ट ने दूसरी भी बात कही कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग मोर बेड्स व्हेन देयर आर नो सफिशिएंट डॉक्टर्स। ये दोनों टिप्पणियां हाई कोर्ट की इस बात के लिए प्रमाण है कि एक तरफ एमसीडी के डॉक्टर्स, एमसीडी के नर्स, एमसीडी का स्टाफ, एमसीडी के सफाई कर्मचारी कम वेतन मिलने की समस्याओं के बावजूद निरंतर उस दौर में काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो ये कर रहे थे उसमें इनकी जो वस्तुस्थिति थी साफ नजर आ रही थी। अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधियों को चाहे लगेगा कि वो ये कह रहे हैं कि विषय के ऊपर, वन सेकंड, विच रूल, विषय के ऊपर डाइवर्ट होने की बात कहते हैं। 238 which point? 238 which one? A, B, C, D, E which one? Sir, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending, make a personal charge against a member, use offensive expression about the conduct or proceeding of the House or any state legislature, reflect or any determination of the council except on a motion for rescinding it, reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantiated motion drawn in paper terms. So this point need to be expunged, sir. This We'll point examine. need to be expunged. अब मैं आगे बताना चाहता हूं, देखिए टिप्पणी सुनना भी कितना कठिन प्रतीत होता है सभापति महोदय, यह इस बात को दर्शाता है। कोई बात नहीं, देखिए ये किस बात को दर्शाता है सभापति महोदय, बिल पे आते। जी बिल्कुल, नहीं अब मैं इस विषय पे भी आ रहा हूं। सारे बिंदु मैंने बिंदुवार गिनाए हैं, ये डर को दर्शाता है। प्लीज सभापति महोदय, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने लिया। नाउ लेट्स लिसन, प्लीज, आई हैव अलाउड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है यह साफ नजर आता है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब इस विषय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह बात बोली है, एमसीडी के संदर्भ में, एमसीडी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डर गए, इसलिए मैं इस विषय के संदर्भ में ही बोल रहा हूं, क्योंकि यह डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं
हम डरेंगे? जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए, प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे। सन 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। बोफोर्स के समय में 400 की मेजॉरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3-3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़ते रहे, नहीं डरे। जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। मगर मैं यह बताना चाहता हूं, हमें डर नहीं है, हमें पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को उनका रिक्विजिट ड्यू नहीं मिले, उस बात की पीड़ा है। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारे दिल में यह पीड़ा यह होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में जिसके काउंसलर अनेक प्रकार के रिश्वत के आरोपों से भी हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। एमसीडी के ही इनके काउंसलर थे जिसके ऊपर दंगे में इतना बड़ा आरोप लगा था, जिनके की छत के ऊपर हथियारों का जखीरा निकला था, उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। मौलवियों का भत्ता 10,000 से 18,000 होना चाहिए, उसके लिए दिल में रहमत है। इन्होंने कहा सहायकों का 10,000 होना चाहिए, उसके लिए रहमत है। मगर एमसीडी के लोगों को सैलरी देने के लिए दिल में हिकारत है। You're a senior member. सुधांशु जी कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उन सब के लिए दिल में रहमत है। और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है, उनके लिए वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं आपको अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत में जानते हैं भय क्या है? ठीक है, किसी को थोड़ा विषयांतर लग सकता है, परंतु ये दिल्ली अब बदल रही है और दिल्ली बदल रही है तो बदलने वालों को शायद वो बदलना स्वीकार नहीं हो रहा है। मैं यहां पर यदि पूछूं, इस दिल्ली में अंतिम भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। शायद हम में से भी बहुत कम लोगों को पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम क्या था, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को पता होगा। वैसे जो बिल प्रोड्यूस किया है तो माननीय गृह मंत्री जी को तो इसकी अच्छी जानकारी मुझे व्यक्तिगत चर्चा से भी पता है। मगर इसी दिल्ली में बैठकर हम में से किसी से पूछा जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का क्यों ना हो, कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो पूरी की पूरी वंशावली पता होती। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। मेहरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है। उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं, वहां तो कोई खंभा भी बना था कि नहीं कभी, ये पता नहीं है, परंतु उसको प्रतीक मानते हैं। यह भय है कि अब दिल्ली अपने वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने ना आने पाए। दिल्ली भारत का केंद्र है और भारत की चेतना का वह स्वरूप उभर कर ना सामने आने पाए, वह भय है। इस भय के लिए मैं अंत में सिर्फ अटल जी की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जिसमें दिल्ली का उल्लेख है। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग-रग हिंदू मेरा परिचय। मैं बता रहा हूं, आपका भय उसमें सामने आ जाएगा। उस पंक्ति, उनकी मैं 4 पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करता हूं। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आपने शरणागतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था सीए में। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर
गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। श्री जवाहर सरकार जी, श्री जवाहर सरकार जी। Thank you, sir. We have heard a lot of talk about rising above politics, but for the last half an hour, all I heard was a level of politics that would rather suit the Delhi Legislative Assembly more. I respect it more than this House. Be that as it may, sir, we have risen because we are duty-bound to stand up for federalism, for the spirit of federalism that holds this country together in spite of whatever some temporary occupants of power may think they have. This country has essentially survived on the spirit of heterogeneity. Do not go in for homogeneity, do not go in for trampling, do not go in for one-way decisions. The very decision that you have taken or about to take or about asking us to endorse is one that speaks of control. My former speaker, Mr. Singhvi, has already mentioned about these things. In 2011, after several discussions, 3 bodies were trifurcated out of the Municipal Corporation of Delhi. Okay? You know that, I know that. Now, you say the Honorable Home Minister, who has introduced the topic of not speaking on politics only, mentions that they have a revenue deficit. Fair enough. So if one has a revenue deficit of 2, the other has a revenue deficit of 3, the third has a revenue deficit of 4, if you add them together, you get -2, -3, -4, -9. Where do you get the positive from? Administration has been my occupation. So I would note that just the mere reunification of 3 disparate bodies that were split for an administrative reason does not confer ipso facto any virtue of revenue stability. That's my first point. The second, I would say, is it's a question of compactness of administration. Do I take this as a hint that you would not go in for splitting of unwieldy states? You would not go in for splitting of unwieldy administration? That you are back to control through large unwieldy bodies, unmanageable bodies? You can provide the answer. Talking of size, the Kolkata Municipal Corporation, the Brihannagar Mumbai Municipal Corporation are larger in size, but we have managed. We are managing. So don't bring in size there. The sum and substance of what I have understood is that you desire to postpone elections. That's all. Because once you go in for a step like this, it will go in for a delimitation, and that delimitation will take you 18 months. And therefore, effectively, you are bringing a municipal issue to a national issue, because exactly 2 years from today, we'll be facing a national consensus, a national referendum. So please do not drag, for the sake of retaining power, I would submit that we do not break down every institution that we have just for the retention of power. When we talk about it, I mentioned about one institution, the Director of Local Bodies. The present Act has a Director of Local Bodies as some sort of an overwatch. In the amendment, you are wiping out the post of Director of Local Bodies without explanation. Even on revenue, you have not provided an explanation, just a one-liner saying that revenue is deficit. So I would submit, sir, don't go in, even if you have to tamper with institutions, please go in for an explanation as to why you did away with it. Maybe you have some valid reasons, but we need to be more elaborate, more transparent. There is this talk that 272 seats would be compacted into 250. Section 3, subsection 5 mentions that the central government will decide the number of seats to be decided by the government of India. The overwhelming presence of a government, of the central government in the Delhi Municipal Corporation Act is unbearably omnipresent. It's there everywhere. It does not speak. The spirit of local body is autonomy. Autonomy is spontaneity.
is vibrancy of local decision making, not thrusting down from the top. Yes. This is what hurts us. This is what hurts us, and my party sincerely believes in it. Now, having spoken on the number of seats, as I said, it is not 250. Let's come out openly and said, tomorrow if the central government decides to make it 370, it can make it. You are keeping that empowering provisions. Sir, we are in 2022 when there has been so much talk of the scourge, the curse of scavenging and waste disposal. Not a single word. Oh, no, I will not say that. There's been one word on scavenging. That's all. Scavenging and waste disposal should have occupied, because this act, the spirit of this act would be copied in other parts of India. And you should have provided a model, even if you had political compulsion for going in for it. Nothing about scavenging, nothing about the curse of scavenging. You have provided for e-governance. E-governance, will be happening anyway, whether you provide for it or not. Now, when you merge all these bodies, what happens is you bring in different cadres. They're humans, they're families. When you bring them together, all this seniority and juniority and other things get in. Morale gets affected, motivations get affected. Don't, like when you are amalgamating banks, you don't know it will take you 10 years for issues to be sorted out. Honorable member mentioned about 12,000 crores. My account says that there is an 11,800 crore running deficit. That is what is required, a bailout package for whoever runs the government. It doesn't matter. It's for the citizens of Delhi, in spite of all the faults that it has. The total liability is 11,800 crores. When will the revenue, when will the package come? Is it tied to this Is it tied to this deal? That is what we'd like to know. I repeat, we got up primarily because the Delhi Assembly was not consulted. My party sincerely believes in consultation with every elected body at every level. We may take their opinion or not, but we need to consult them. This sort of complete unilateralism, let me give you just a few examples because they strengthen what we have said. Even in COVID, an act that we had prepared, I was also part of the preparation once upon a time, the NDMA Act was brought in as if it was an enabling, it was a weapon that could be utilized for the totalization of power. That is not the correct attitude. The initial faltering that we made, the mistakes that we made as a nation arises from the mentality of control freak, as somebody put it. Even in COVID, there was no consultation at all when the lockout, when the lockdown was imposed. At every level, every step shows an arrogance, if I may put it, shows an uncaring attitude for the sensitivities of others, for regions, for states, as if just a pack of people running in Delhi, including bureaucrats, would determine the fate of every mohalla of Delhi. No, sir, this will not do. When the BSF rules were extended to all states, no consultation was made. That was another. Draconian laws and draconian regulations are sought to be expanded at the expense of at the contraction of the space available for the individual, for society, local government and state government. That is my submission. And that is my submission. Even the ED, the Enforcement Directorate and the CBI are regularly used to weaponize, to summon, to humiliate and to hegemonize over others. It's happening all the time. Now, even in Delhi, I would submit. Please conclude, honourable member. Amendment. Please conclude. I'll just half a minute. I'll wrap it up. The submission that I have felt as an outsider to this politics of Delhi is that this is only a ploy to postpone the elections, and that is dependent upon the prospects of their victory or not. Do not treat the national capital as just a trump card in your politics. I oppose the bill, sir. Thank you. Honourable Shri R.S. Bharti ji. Honourable Vice Chairman, sir, thank you for giving this opportunity. At the outset, on behalf of DMK, I want to oppose this bill, sir. This is undemocratic, as rightly pointed out by previous speaker, Mr. Singhvi. He has rightly pointed out what are all the
illegal that this government is trying to do by unifying these three municipal corporations. I would like to ask the government, you apply one rule to Kashmir and Jammu and Kashmir, there you separate. You bifurcate. Here you are uniform. What is your policy? I want to know that. There, for your convenience, you gave so many explanations for bifurcation of Kashmir and Jammu. Here, you are giving lame excuse because you want to postpone the elections. Everybody knows that. What were you doing all these 5 years? You were in power from 2014, you are sitting here. What prevented you from bringing this bill 2 years back? Why were you sleeping? Because of the Punjab result and the other states result, Uttar Pradesh also, you did not fare well. Therefore, you have no confidence in your people. Therefore, you want, with an ulterior motive, the only motive is to postpone the elections. You say you want to increase the strength of the parliament members to 1,000. But whereas in this bill you say from 272 you want to bring it to 250. What is the logic, sir? So you want to create some lacunas in this bill and give room for people to go to the court and stay the bill such that elections will be postponed further. Therefore, I would request, sir, the Honorable Home Minister said that stepmotherly treatment is done by the local government. Can I point out to the central government and say that what is the central government doing? What applies to Gujarat should apply to Tamil Nadu also. What applies to Gujarat should apply to Kerala also. What applies to Gujarat should apply to West Bengal also. What applies to Telangana to Gujarat should apply to Telangana also. What applies to Gujarat should apply also to Andhra Pradesh. Sir, Tamil Nadu was suffering. Our Chief Minister appealed to you. Your team visited and saw the floods and the so many disasters that was caused to Tamil Nadu. But did you come forward to give the amount claimed by the state government of Tamil Nadu, sir? No. What you gave to Gujarat comparatively, you say. Therefore, this is not a valid reason. Because the state government is giving a stepmotherly treatment to one of the reasons stated by Home Minister is not acceptable. Therefore, I would request the Honorable Home Minister to withdraw this bill and conduct the elections to the local body at the earliest, because in democracy, and moreover since I have been a municipal chairman for more than 2 decades, continuously 4 terms in Alandur, I know what is the difficulties the people will face once there is no municipalities. From the cradle to the grave, everything is to be taken care of by the local bodies. Local bodies should be given powers. But this government, central government, is trying to accept power after all the powers you want to take away from the states. Education you have taken. Now you want to take away the registration also. So state governments are going to become more or less a municipality, and municipalities are going to be still worse. So therefore, sir, I would urge upon the Honorable Home Minister to withdraw the bill and to pave way for early conduction of elections in Delhi, sir. Thank you. माननीय श्री प्रसन्नाचार्य जी. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, many doubts are being raised about the constitutionality of the bill. Sir, I'm not an expert in the Constitution as Manu Singh Biji is. But whatever little knowledge I have about the Constitution and whatever I know, the power and authority that has been granted to the state of Delhi with the Constitution is not at par with other states. And sir, I think under Article 239A, 3B of the Constitution, I think constitutionally the central government has the competency, has the authority, and has the jurisdiction to bring such a bill.
So I'm not going to question the constitutionality of the bill, sir. But my only doubt or only question is about the propriety of getting such a bill. Because, sir, Government of India is a big thing. It is not a small thing. And Government of India has many responsibility to discharge. They have to eradicate poverty of the country. They have to improve the GDP of the country. They have to take care of security of the country, the border of the country. So a lot of greater responsibilities are to the central government. So I, as a layman, fail to understand what is the necessity of the central government being taking over directly or indirectly the responsibility, the charge of a municipality. It is a bigger municipality, sir. That is my only question. And the second thing is, but constitutionally, as per the constitutional provisions are concerned, the central government has every competency to bring such a law. And if any doubt is there, any question is there about constitutionally, the court of law is there, sir. They are the final authority to take a decision about the constitutionality of the bill, because in the past, many laws that have been passed in this house or in the parliament has also been challenged in the court of law. So the court of law is the final authority to decide. Sir, one thing I do not understand, our argument is after the trifurcation of the corporation, the financial condition, the situation went worse and worse. And there was imbalance in collection of revenue and streamlining the expenditure between the three corporations. But whatever figure I have got with me is, before trifurcation also, before 2011, when it was one corporation, the financial condition of the corporation was not very sound. Sir, if my information is correct, there was a deficit when it was unified corporation of around rupees 2,451 crore when it was a unified corporation. So I don't think there is any logic in saying that after trifurcation, the financial condition went wrong, and after unified again, it will go right. So therefore, sir, we have to streamline the revenue collection and streamline the expenditure, sir. Sir, Sudhanshu Trivedi was very rightly pointing out, even the Delhi State Finance Commission recommendation was not implemented by the Delhi government. The Delhi, if my informations are correct, the Delhi, the fourth and fifth State Finance Commission recommendation, the fourth Delhi Finance Commission had recommended for 100% reimbursement on education sector, but the Delhi government did not implement that recommendation. I do not know why. So we accuse each other about doing politics in all these affairs, but I think none of us are above these politics. Sir, moreover, sir, likewise, sir, the 5th Delhi Finance Commission recommended to give 40,561 crore to the three corporations, but the Delhi government sanctioned only 7,000 crore. So how can we streamline the corporation? So either you bifurcate it, either you trifurcate it, or you unify it. Unless and until you streamline the revenue collection and streamline the expenditure, you are not going to solve the problem. Sir, one interesting thing I will cite here for your, and for the, particularly for the attention of the Honorable Home Minister, sir. Sir, the fees or rates of revenue collection prescribed in the old schedule in the DMC Act of 1957 are surprisingly still continuing. I will cite only one example. For example, there is a theatre tax, cinema hall tax. For each show, the cinema authority has to pay a tax to the corporation. And in 1957 Act, the tax rate in the 14th schedule of the DMC Act was only 10 rupees per show. About 65 years before, it was 10 rupees per show, and today also it is 10 rupees per show. Very surprising and amusing. So how can we expect the revenue collection of the corporation, whether it is a unified corporation or whether it is a trifurcated corporation, will go up, sir? So therefore, sir, all these things has to be taken into consideration. And I think there is no mention in the bill about who will fund now. Now the power has been taken over by the central government. Funding will be made by the state government. I find a contradiction in this. So there is no provision in the bill about where from the corporation will get the funding, the subsidies, the assistance. I think the Honorable Home Minister, while replying, will clarify that one also. Sir, one important thing is
that Honorable Home Minister was rightly pointing out, there are more than 1 lakh employees in the 3 corporations. It is 1.25 lakh employees, sir, and many of those employees are not regular employees. Even after completion of service of 5 years, 10 years, 15 years, or 20 years, the employee services are not being regularized. There are doctors, they are temporary. There are paramedical staff, they are temporary. There are primary teachers under the corporation, they are temporary. And during the last COVID time, the corporation doctors of the 3 corporations, they rendered beautiful services. And I know few of the doctors, they succumbed to death while putting their services. But they didn't get any benefit as the regular employees are getting. So how can we expect better service from these employees? So my urge to the government is, I do not know whether the central government will do it, or the state government will do it, or the Public Service Commission will do it. All such employees who have rendered services for more than 10 years, 15 years, 20 years, they are still suffering in the corporation, all the 3 corporations, they should be regularized. At least for once, they should be regularized for once for all, so that the services of the corporation, the employees, will go up. And my last point is, sir, I was going through one provision, just half a minute, sir, about the scavengers. The present bill provides for omission of section 388 of the Main Act, and this cleaning service is very essential service. And sir, all of a sudden, if one scavenger, one employee who is giving such service stops working without notice to the authorities, there will be a chaotic situation. So I do not understand why this provision is being omitted from this bill, sir. With this, sir, though I have expressed many doubts, and I hope the Honorable Home Minister will clear has no doubt, because the corporation is going to be unified. It is a very good proposal. We support it. My party support it, but with one condition: let us not defer the election of the corporation on any pretext, sir. I know. I want to know from the Honorable Minister whether on what basis, on this basis of which censor the delimitation work is going to be conducted. Whether it is on the basis of the 2011 census or it is on the basis of the ongoing census. If you are going to do it on the basis of the ongoing census, then election will be delayed for minimum 1 year time. So therefore, my proposition is, let us do it on the basis of the 2011 census, so that as quickly as possible, election can be held and power can be handed over to the local representative of Delhi. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Ayodhya Rami Reddy. Please. Thank you. No. You are nobody to ask a clarification from me. Please. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Sir, the municipal governance in Delhi has been inefficient ever since the Congress-led Delhi government split the Delhi Municipal Corporation into 3 separate corporations back in 2012. Congress has left behind a legacy of illogical and unscientific bifurcations, made 1 rich MCD and 2 poor MCDs like the East and North Delhi ones, just like they did it in the case of Andhra Pradesh. No wonder Congress itself is bifurcating now. Hence, I thank the Centre for introducing this bill and taking the necessary steps for reversing this irrational trifurcation at the hands of Congress. The positives: financial inequalities will be removed. After this bill is introduced, the trifurcation problems will be resolved and geographical divisions and revenue generation sources will improve, and South Delhi is going to bring back the inputs, and some of the resources that are available will come back, and it gets integrated with the other 2 corporations. If you see, sir, South Delhi has almost 4,000 crore of revenue and East Delhi has 2,900 crore, where the development needs are higher in East Delhi and than South Delhi. There is no parity between resources and obligations of the corporations. By unifying the 3 corporations, these financial inequalities will be addressed. The second point, pending funding issues will be resolved. The employees in the corporations, from sanitation workers to doctors and teachers, have been on regular strikes. Every few months,
since 2020 due to delays in payment of salaries, pensions, contractors' bills. These dues are estimated to be around 13,000 crores. Many development projects, especially in the financially starved areas of East Delhi, North Delhi, have been long pending for want of funds. With this bill, financial administration of the municipality will be centralized at the union level, ensuring stability and equality in funding. E-governance system will be instituted. This e-governance bill will bring in the corporation an efficient system for citizens on any time, anywhere basis. This is a welcome move, especially in the aftermath of the pandemic when digital services have become the new normal. Sir, AP has been at the forefront of the e-governance revolution. Our visionary Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy Garu has launched the AP Seva Portal 2 to ensure digital delivery of citizen services. The portal offers more than 100 citizen services pertaining to revenue and land administration, civil supplies, rural development and energy development. So this e-portal is a very good initiative by the centre. We have few suggestions. It should be ensured an effective decision-making and efficient administration to be brought in by taking into consideration multi-parallel bodies within the three corporations have confused everyone as to which body has what power and to what extent. There are 3 mayors, 3 commissioners, 12 additional commissioners and several committees. All have overlapping functions. This has not only complicated decision-making, but also increased salary, expenses and added to the financial crisis. The government must ensure that the unification process eliminates unnecessary bodies, leads to targeted decision-making and reduces administrative expenses. Then second one, we have to fix the responsibility for the loss suffered in the last 10 years. Sir, this is very important. Yeah, please wind up. Then also, you have to bring in the procedures that have been prescribed for delimitation of wards. So, finally, sir, in Delhi is our capital and Amara Izzat hai. Delhi ko, on all aspects, we have to make it the best. If you see the central government, state government, municipal corporation, North Delhi corporation, cantonment areas, PWD, CPWD, इतना organizations हो गया है कि इतना confusion हो गया है, तो इसको पूरा बंद करना है, ये area को पूरा, we have to really bring into the best standard, under one governance, one rule, we have to really put it into the right shape, otherwise, the best of the people in this country who are staying here, for them, we have to give, and we also showcase to the world that, एक हमारा दिल्ली को सही नहीं रख सके तो पूरा देश को क्या रखेगा. So, ये हिसाब को हमको सब, we have to go beyond politics and then please ensure that we make Delhi the best. Thank you, sir. Thank you, Mr. Reddy. The next speaker is Dr. M. Thamudurai. Thank you, Vice Chairman, sir. On behalf of ADMK party, we are supporting the Home Minister's bill as brought to merge the 3 municipalities, Delhi municipality together. Sir, Delhi, despite being a single city, is governed by 5 separate local bodies, including 3 municipal corporations of Delhi, New Delhi Municipal Corporation and Delhi Cantonment Board. Sir, this municipal corporation, Delhi used to govern almost 90% of the population till 2012. But unfortunately, this has been bifurcated unnecessarily. This high time this government, Modi ji government, under the Home Minister, now has brought a bill, ADM is welcoming, sir. At the same time, mentioned about the financial problems, what faced make the government to bring together all the municipalities, despite of so many corruption, so many problems, salary not paid. You mentioned that. I appreciate that. At the same time, I have seen that opposite side, DMK side, they started to spend politics in this. Why they are municipal, instead of facing Delhi Municipal Corporation, they are building a central federal system. As state government is suffering a lot because of the Modi ji government of Tamil Nadu. That is not correct. Modi ji has given so many schemes for Tamil Nadu. In that budget itself, they mentioned Modi ji plan only in they mentioned the DMK government. And also, recently, Chief Minister of Tamil Nadu met all the ministers here, including Prime Minister, Home Minister, Nadaji also they met.
After meeting that, what they said? No, I'm telling. Everything, the press statement, Minister said, Prime Minister said, we are satisfied with the talk with the ministers. Now he is telling, criticizing that. That is not correct. What happened? Regarding the local administration elections, what happened in Tamil Nadu? Our Yadapadi Palaniswamy made a grave statement. This present government, DMK government, misused all the power in the municipal election, corporation election. We are deprived of them. So many seats are. No, I'm telling this is what happened. This is a fact I want to tell. It has been to the House. When they are criticizing this government, I have to criticize. When my parties, when they are suffering a lot. I am suffering. Mr. Jairam, No, I'm please. telling. Say, 18 years. Don't speak without my permission. Don't speak without my permission. DMK and the central government. What they made an attempt to take the power. When the power, if they want central state government power, they would have fought at the time. 10 years with your Congress government, 5 years the BJP government, 15 years other VP Singh government, 18 years there was central government DMK, now saying federalism, power has gone, the Tamil Nadu municipality. What is the municipality? They would have fought at the time. Now the time has come, they have not fought at that time. Now they want to politics. He addressed the chair, Mr. Thamudurai. You don't have to reply to him. When they are criticizing this government, I am appreciating the Modi government. They have given lot of schemes for Tamil Nadu. They are giving also many schemes. That is why what even the budget of Tamil Nadu presented recently, they said all Modi government, Modi ji schemes on central government schemes, not any scheme. Therefore, bringing politics unnecessarily and criticizing this government is unfair. I am supporting this bill because it's a municipal, New Delhi Municipal Corporation problem only we are discussing. Therefore, what our Honorable Home Minister has brought with the concern of the Prime Minister ji, I am appreciating, supporting, merging the all municipal corporations. Thank you. Thank you, Mr. Sambudurai. The next speaker is Srimati Jaya Bachchan. Please. Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. I'm not opposing this just for the sake of it, but this bill is an attack on the federal structure. Half power has been taken by the Lieutenant Governor. The other half is going to be taken over now, of course, because you have a large number, you have a large voice, and you have the muscle. And, sorry? Please don't disturb her. This taking over makes the elected government ineffectual. सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. त्रिवेदी जी के हिंदी और जवाहर जी के अंग्रेजी से मेरा दिमाग इतना बौखला गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी भाषा में बोलूं. मैं हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूं. सर इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना काम है. स्वच्छ भारत है, फिर अच्छे दिन का है, और भी अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, फार्मर्स का प्रॉब्लम है. सर ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहिए. आप बोलते जाइए, आप मुझे एड्रेस कीजिए और बोलते जाइए, दूसरा का मत सुनिए. मैं दूसरों का सुन नहीं रही हूं. जब इनको हमने अच्छे से शांति से सुना, इनको भी सुनना चाहिए. Empty vessels makes the most noise. Sir, will this government, I'm very concerned about the unemployed. Will this government assimilate and keep the staff working in these after they have taken over? I mean, you know, it's almost quite a helpless situation for all of us. उन लोगों ने गलती की, ये भी गलती कर रहे हैं, हम लोग रजिया बैठे हुए हैं यहाँ, कुछ नहीं कर सकते. और will they employ a lot more people? I hope they do. Since our hands are tied, the only voice that I have, I say, I oppose the bill. It's not democratic. Thank you. Leave states alone.
Thank you very much. The next speaker is John Brutus. Sir, I stand to oppose the bill. Sir, Amit Shah ji ne bola hai, he doesn't get angry, except on Kashmir. I am glad that if he is receptive on the Delhi municipal bill, he would withdraw the bill. Yes. It's precisely because it's against the public announcement they make with regard to federalism. Every time they say that, they are for cooperative federalism. Sir, I would have appreciated the Home Minister if at all he had convened a meeting of all parties, including the state government, to explore the possibilities and telling them, look, why can't we converge or merge these municipal corporations? They haven't done anything like that. They have bypassed the state government. If he had a difficulty of sitting with Kejriwal ji, they could have called Sanjay Singh ji, such a decent man. They could have called him. Unga panga to ye Kejriwal ke khilaf hai, theek hai. They could have invited Sanjay Singh ji. Sir, I will just quote a statement. And I would, at the end, I would say, kiska hai? If the government ruling the entire country rules over Delhi, it will neglect its duties as a national government and will do injustice to the people. Delhi has mostly been under the direct control of the central government. If the center again puts it under its control further, it is the bureaucracy which will govern Delhi instead of people's representatives. किसने बोला है? मार्गदर्शक मंडल का मेंबर है LK Advani ji. Mr. LK Advani made this statement when he was the opposition leader. You should be staring at their face, sir. Amit Shah ji, if you are receptive to Advani ji, please withdraw the bill. Because actually what he has stated, you are doing it. You are depriving the people. You are denting the federalism. You are denying the basic rights of the democracy, people. You are leaving the state to the mercy of bureaucrats. That is essentially what you are doing, sir. Amit Shah ji, while he was replying in Lok Sabha, he was saying that Election Commission had convened the press conference not for declaring the election, but for declaring the merger of the corporations. ये उनका काम है क्या? ये merger करने के लिए? Can you ever imagine an election commissioner convening the press conference to declare that I am going to merge the corporations? How can the Home Minister of this country, make such statement? Sir, I yield. Honorable Home Minister ji. सभापति महोदय, मेरा भाषण हिंदी में था, शायद वो समझ नहीं पाए होंगे. हिंदी समझते सर. तो जरा ध्यान से सुन ले, वो जो मुझे कोट कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं बोला हूँ. इतनी ही स्पष्टता करने के लिए मैं खड़ा हूँ. Sir, if I am wrong, I stand corrected. But that was the sum and substance of his statement. He also said that, sir. Sir, he also said that. Sir, now let us see what is the status of this corporation. People have been quoting 11,000 crore, 12,000 crore, which the central government offered to these corporations. Sir, I will just cite one thing. Sir, the 5th Delhi Finance Commission underlined chapter 8.22. Sir, please note down. At the irregular diversion of a plan funds worth for rupees 459 crores. And even the EPF contribution was diverted. By whom, sir? The corporations under BJP. Sir, did you take any action? Have you uttered a word against them? Sir, you have allowed those corporations to be steeped deep in corruption. Mr. Britas, your time is up. Your time is up. One, sir. Honorable Minister is listening to me. He wants me to conclude. Speak further. Please conclude. Please conclude. Sir, Home Minister wants to Please hear me. Conclude. You don't have to refer. I am trying to help him, sir. Okay. Sir, let us see. If they had a genuine interest for the people of Delhi, ये क्या होता है sir इधर? Last 5 years, hangama. It's a LG rule. Do they believe in basic democracy? They unleashed the officers against elected representatives.
What sort of tamashas were happening in the state of Delhi, sir? Thank Sir, you. on Your a time is fine up. morning, Mr. Bitas. Fine please. morning, if they can dismiss Please, a please. state government. Please sit down now. Sir, I only request the Home Minister, please heed to the sound counsel of the different political parties. Please withdraw the bill. If you don't get angry, Thank please you. also be receptive. Now, please, Mr. Wahab. Abdul Wahab. We are talking about decentralization always. Every time we are talking decentralization, even Kashmir also we have seen it is now decentralized. Everywhere. Now in Delhi it is unification. Okay, we can agree on that one regarding the expenses, so many mayors, so many commissioners and all. Why can't we unify all states? No governors, no chief minister, no minister. You karega, yeah? Karega, let them. Yeah. If I am, because of me, they are do it. And so this is, you don't interfere me. This is the way. Government and everybody is saying decentralization, Panchayati Raj and everything. Please, I know that we will say yes, 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 no, 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 and we are going to see within few minutes. But it is not going to happen. Still, we can appeal to Home Minister that please withdraw the bill. Thank you. Thank you, Abdul Wahab ji. Now the next speaker is Z.K. Vasan. Sir, the purpose of this bill is unifying the three corporations of Delhi. In 2011, MCD was split into three. For what purpose? They wanted 3 mayors, 3 commissioners, 3 deputy mayors. Did the purpose? I am feeling for it now. I am feeling for it now. I am feeling very badly for it now. Mr. Ramesh. Mr. Ramesh. Sir. Mr. Ramesh. Mr. Bitas, nobody disturbed you, you are disturbing. When you spoke, nobody disturbed, but you are disturbing. Sir, the decision Stop which was disturbing made. now. Mr. Ramesh, please be seated. Mr. Vasan, please continue. Please continue, you don't have to reply to that. Sir, we are feeling for it, sir. It should not become like Andhra and Telangana. They are seeing, the Congress party is seeing the wrath of it today. Sir, the decision was to ensure efficiency in municipal services in Delhi. But unfortunately, sir, in 10 years, we have witnessed that the bifurcation is not met. Indeed, MCC still face many efficiency and sustainability related challenges, sir. It's time, sir, that it has to be changed. Delhi is not only the capital of our country. We need a world-class city to live and show a model MCD. Sir, the fact of the matter is, we have to fix infrastructure, air pollution, choking traffic, water supply, drainage system beyond Lutyens Delhi, sir. Unfortunately, sir, we all know Delhi has emerged as the most polluted capital today. It is time to think of a box solution for Delhi, sir. The need of the hour is insightful planning. In the absence of this, investment